वेलकम बैक टू गो टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं सेटअप नेटवर्क लोड बैलेंसर्स लैब। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब। नेक्स्ट हम इसे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। क्लिक आई अंडरस्टैंड। आई एग्री, अग्री एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट यहाँ से ट्यूटोरियल को क्लोज करके हम यहाँ वापस आएंगे ऑन टू द टास्क वन। फर्स्ट हम इन दो कमांड्स को रन करेंगे जिससे हमारा रीजन सेट होगा। कॉपी दिस। इसके लिए हमें यहाँ से क्लाउड शेल को एक्टिवेट करना होगा बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। क्लिक कंटिन्यू। क्लिक ऑथराइज। नेक्स्ट पेस्ट द कमांड here। कमांड के रन हो जाने के बाद हमें दूसरा कमांड रन करना है जिससे हमारा जोन भी सेट हो जाएगा। Task 2 is to create multiple web server instances. So first copy this command, run it here. Okay. Come back, run the next command. We will keep repeating the same thing. You have to run all these commands in sequence as they are creating virtual machines. First one, second one, and then third one. Then we add a firewall rule to external traffic. After this, we will paste another command, this time to create a virtual instance named www3. When this is completed, we will go back to the lab. In this, this is completed. Come back. Copy this command, run it here. Next, you can verify each instance by running the curl command, replacing this in the external IP address of each VM. So copy this, come here, paste it, remove this IP address part, and then enter this external IP. First, we will do the for the ww1. Next, we will do it for ww3. Next, we will do it for ww2. Recommend you to just copy paste it, or else you may encounter a problem like this.
After verification is complete, click check my progress. Now अब हम task 3 पे आ जाएंगे, which is to configure the load balancing service. So first we will run this command. This is completed, come back here. Add this health check. Next, click check my progress. After this is completed, अब हम आ जाएंगे create the target pool and forwarding rule पे. We will run these commands in the sequence. Progress. Then there is task 5. However, the lab is now complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Now you can just simply end this lab.